The process will be exactly the same. What will happen is that when you are more than 60 years of age and you have already been given 2 doses, and if you want to register for the third dose, if the gap between the second dose and the day you are registering, or the day you are getting the third dose, is more than 9 months, which is 39 weeks, then you are eligible. When you register, you will be asked whether you suffer from any of the comorbidities which have already been described in the earlier circular by the health ministry. If you say yes, I do suffer from the comorbidity, then you can register, and thereafter you can go to vaccination center. You have to show your comorbidity certificate given by your registered physician, whosoever is your the doctor, and thereafter you will be able to get the jab. So there is nothing different. The rules related to registration are the same. Rules related to vaccinations are the same. Sir, what about children? They are also going to follow the same process. And what about the children who comes under comorbidities? No, the children of 15 to 18 years of age, whether comorbidity or whether normal children, will be able to get the vaccine and will be able to register on the CoWIN platform as before. The only difference will be that now we know that there may be challenges in terms of their identity documentation. For example, they may not have they will not have the voter ID card, for example, because they are less than 18 years of age. Some of them may not have Aadhaar or may not use Aadhaar. So we are allowing that, and there are 9 documents which are eligible, which you can show any document out of those 9. So we are allowing the student identity card also to be one of the 10th document in case of children between 15 to 18 years of age. And they will be able to register, and they will be able to register from 1st of January, because the jabs will start from 3rd of January onwards. So that's what is the process. Sir, what kind of ID card it can be? No, 9 ID cards which are already enumerated and which are already given in the CoWIN platform, which are available, which is driving license, passport, Aadhaar, and the voter ID card and such documents. The 10th ID card, additional ID document, which we are allowing for children, will be student's identity card. That's what it is. Sir, my next question is related, sir, that how the pandemic has led to a rapid adoption of technology in healthcare space. Well, that's a general question. What has happened is that during this period, because of the restrictions of movements, etc., people have adopted to digital means of communication. So, for example, we are talking on a virtual platform today. In normal course, you would have come to my office, and or I would have gone to ANI office and given, we would have talked to each other. Today, we are talking on this digital platform. So, I think the adoption of digital has been the only positive aspect of this pandemic. Otherwise, it has been a disastrous, consequences for all of us. Similarly, digital payments have also increased very, very significantly. So I think from a digital standpoint, I think adoption of digital technologies has seen an acceleration due to this pandemic. Sir, if we talk about the third wave, so in the second wave, there was a lot of problems, but in third wave, how it is going to be helpful, and what are the plans for expansion? No, I am not really, dealing with those issues of third wave or other kinds of waves. I'm simply dealing with the issue of managing the CoWIN platform, and I will be able to answer questions related to that platform only. Sir, what are the plans for expansion, sir, if we talk about other programs? So the platform will be redeployed, repurposed for universal immunization program, for managing the blood bank ecosystem, and probably other programs also, which are similar to this kind of program, where there are stakeholders. One is providers, another is seekers, and then we want to have coverage, comprehensive coverage. So universal immunization program will be a very good candidate for COVID to be replicated. सर, मैं हिंदी में जानना चाहूंगी, प्रिकॉशनरी डोज एज अ थर्ड डोज जो इंट्रोड्यूस हुई है, उसमें खास तौर पे जो बुजुर्ग हैं, जो कोमॉर्बिडिटीज में आते हैं, उनको किस तरह के सर्टिफिकेट्स चाहिए होंगे, और बच्चों के लिए क्या क्या गाइडलाइंस हैं? नहीं, देखिए, बच्चों के लिए तो कोई गाइडलाइंस नहीं है. केवल 15 से 2007 के पहले जो पैदा हुए बच्चे हैं, दे विल बी एलिजिबल फॉर दिस, जिनका ईयर ऑफ बर्थ 2007 या 2006 या 2005 हो.
दैट इज नंबर 1। और उसके बाद जो है बाकी तो बुजुर्गों के लिए जो 60 साल से ऊपर के हैं उनको भी कोई जरूरत नहीं, उनको फुली वैक्सीनेटेड होना चाहिए। और उनकी जो दूसरी वैक्सीन लगी है उससे लेकर के जिस दिन वो वैक्सीन लगवाएंगे तीसरी वाली प्रिकॉशनरी डोज, उसके बीच में 9 महीने का फर्क होना चाहिए। 9 महीने का फर्क के करीब करीब 39 सप्ताह होता है, तो 39 वीक्स अगर उनको हो गए हैं तो उसके लिए वो वैलिड है। उनको ऑब्वियसली बताना पड़ेगा कि वो किसी कोमॉर्बिडिटी से सफर करते हैं और वो उस कोमॉर्बिडिटी का सर्टिफिकेट अपने वैक्सीनेशन के टाइम पे ले जाएंगे। कोमॉर्बिडिटी का जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया बहुत पहले ही इसमें डिफाइन केंद्रीय मंत्रालय ने कर दिया है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने, जब हम लोगों ने 45 साल से और 60 साल के बीच में एक बार योजना बनी थी कि भाई इसमें जो कोमॉर्बिडिटी के लोग हैं वो लोग ले जा सके, वो लोग जैब्स ले सकेंगे। उस समय कोमॉर्बिडिटी के जो क्राइटेरिया निर्धारित किए गए थे वही क्राइटेरिया अब भी काम आएंगे। सर अगर हम बात करें फ्रंटलाइन वर्कर्स की भी, हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, इनको भी जो थर्ड जैब लगेगा उसके लिए कोई क्राइटेरिया है या फिर सेम ही रहेगा? उनके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। जो फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर है उनके लिए प्रिकॉशनरी जॉब जैब में ना कोई एज का क्राइटेरिया है, ना कोई कोमॉर्बिडिटी का क्राइटेरिया है। तो एज का क्राइटेरिया तो कभी भी नहीं है, सबके लिए अब सार्वभौमिक रूप से अवेलेबल है। लेकिन इसमें जो है थर्ड डोज के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं। क्राइटेरिया यही है कि उनको हेल्थ लाइन वर्कर या फ्रंट लाइन वर्कर होना चाहिए और उस प्रकार से हमारे प्लेटफॉर्म पर उसी तरह से वो लोग दर्ज भी हैं। सर ये पेंडेमिक का जो टाइम था, अचानक से काफी सारे चेंजेस आए, लोग एकदम से डिजिटलाइजेशन को भी अब अडॉप्ट करने लगे हैं। ऑनलाइन काउंसलिंग हो या फिर और भी बहुत सारी चीजें हो, ऑनलाइन पेमेंट हो, तो ऐसे में हेल्थ केयर स्पेस में इसका क्या रोल रहा है सर? देखिए इसमें तो जैसा कि आपने कहा कि पेंडेमिक का बहुत दुष्प्रभाव सब तरफ पड़ा है, लेकिन एक अच्छा प्रभाव इसका ये हुआ है कि लोगों ने डिजिटल टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल ज्यादा यूज करना शुरू कर दिया है। उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कंसल्टेशंस, डिजिटल पेमेंट्स, ये सारी चीजें बहुत बढ़ गई हैं। तो इससे हम लोग इसको इस्तेमाल करके जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 27 सितंबर को जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का उद्घाटन किया, शुरुआत की पूरे देश के लिए, वो बहुत उसमें बहुत फायदा हम लोगों को होगा, क्योंकि लोग जो है अपनी हेल्थ अकाउंट अपना बना लेंगे, हेल्थ आईडी बना लेंगे और उसके बाद अपने जो प्रोग्राम्स हैं, जो अपने उनके डायग्नोस्टिक रिजल्ट्स हैं या बाकी जो चीजें हैं उनको डिजिटल रख सकेंगे, शेयर कर सकेंगे। तो उससे डिजिटल और कंसल्टेशन जो है आपको टेलीमेडिसिन वाला उसको कर सकेंगे, तो उससे बहुत बड़ा फायदा होगा। जैसे कि सरकार सर इम्यूनाइजेशन और भी कई तरह के प्रोग्राम चला रही है, ऐसे में क्या एक्सपेंशन आप सोचते हैं, किस तरह से और आगे काम करेंगे? जैसे मैंने कहा कि कोविन को जहां जहां पॉसिबल हो सकता है, जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो ब्लड बैंक के लिए, इस तरह के कामों में हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और इससे हमारा क्योंकि प्लेटफॉर्म अब बन गया है तो इसको हम आसानी से वहां पर रेप्लिकेट कर सकते हैं। Thank you so much, sir, for joining me on ANI, and all the best, sir. Thank you, sir. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News24।